हेलो, थैंक यू यहाँ आने के लिए, थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारी फ़िल्म को इतना सपोर्ट देने के लिए। लेकिन आज हमारा दिन नहीं है, इन लड़कियों का दिन है, तो जितना प्यार आपने मुझे दिया है आप प्लीज़ इनको दीजिए एंड इनकी स्टोरीज़ आप सुनिए। थैंक यू। Ladies and gentlemen, today we have the honor of having some real life heroes, the victims, brave individuals who have experienced situations similar to what is portrayed in the film, join us on the stage. They have graciously agreed to share their stories, offering us a glimpse into the reality that the Kerla story aims to address. It takes immense courage to stand before us, and we applaud them for their strength and their resilience. Through their experience, we hope to deepen our understanding and empathy towards those who have faced similar challenges. And let me tell you, there are thousands across the country who have faced these challenges. Their presence reminds us of the importance of not just watching movies, but actively engaging with the issues they present. Let us listen attentively to their stories and make a positive difference in the life of others. Ladies and gentlemen, please welcome on stage not just one or two, but 26 conversion survivors who will be flown in all the way from Kerala to talk about their experiences. Please welcome the real life heroes. Okay, ladies and gentlemen, I know the initial applause has given way to stunned silence, wondering what really is in store. And these ladies will, in their own voice, tell us what they have been through. And we applaud them for their courage. It takes courage to come forward and talk about what they have been through. And ladies and gentlemen, to tell you exactly what this entire event and the significance, I'd like to invite back to address you, Creative Director and Producer, Mr. Vipul Amritlal Shah. ये सारी लड़कियां बहुत बहादुर हैं, बहुत सारा खतरा उठाकर अपनी ज़िंदगी जीती हैं आज भी, और उस खतरे के बावजूद ये खुल के सामने आई हैं। उनको अपनी आवाज़ मिली है इस पिक्चर के थ्रू, और वो आवाज़ अब दबनी नहीं चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आज हम एक इनिशिएटिव शुरू करना चाह रहे हैं जिसका नाम है प्रोटेक्ट आवर डॉटर्स। इस फिल्म का पर्पस था सेव द डॉटर्स, पर वहीं हम रुकना नहीं चाहते, हम बात को आगे ले जाना चाहते हैं, हम कुछ बदलाव चाहते हैं इनकी ज़िंदगी में। ये लड़कियां एक आश्रम बनाने की कोशिश कर रही हैं ताकि वो लोग वहाँ एक सुरक्षित और अच्छे माहौल में अपनी ज़िंदगी जी सकें। सबसे पहले मैं इनसे आमंत्रित करूँगा और ये आपको बताएंगी अपनी ज़िंदगी के बारे में भी और उस आश्रम के बारे में जो बनाना कितना ज़रूरी है और उसके लिए हम क्या करने वाले हैं। प्लीज़ आइए और अपनी बात लोगों तक रखिए। I would like to say it first. 10 years back, I was victim of ideological conversion, and it was Arshvidya Samajam and Acharya Shri K.R. Manojji, the founder and director of Arshvidya Samajam, who brought me back to Sanatana Dharma. Arshvidya Samajam क्या है और आर्षविद्या समाजम के संस्थापन कैसे हुआ और इसका एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ।
99 में आर्ष विद्या समाजम का संस्थापन हुई है। आचार्य श्री KR मनोज जी ने संस्थापन किए थे और इसका मिशन जो वेद ग्रंथों में लिखी हुई है, ईश्वर का वाणी होती है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, लेट द यूनिवर्स फिल विथ नोबल वंस। ये मिशन पूरा करने के लिए, टू फुलफिल द मिशन, आर्ष विद्या समाजम इज एस्टैब्लिश्ड। ये मिशन पूरा करने के लिए कैसे करें? सनातन धर्म का पंच कर्तव्य का पालन करना चाहिए। पंच कर्तव्य मतलब सनातन धर्म का सही अध्ययन, अनुष्ठान, सही तरह की प्रचारण, अध्यापन और संरक्षण होना चाहिए। ऐसे ही हमारे कृण्वन्तो विश्वमार्यम पूरा कर सकेगा। तो इसलिए संस्थापन हुई थी आर्ष विद्या समाजम। इसके लिए 4 कोर्सेस भी तैयारी की गई। आध्यात्मिक शास्त्रम नाम से सनातन धर्म को पद परिचय से सिखाने के लिए कंपैरेटिव रिलीजन भी इसमें इंक्लूड किए गए, ताकि सनातन धर्म और दूसरी मतों के बारे में भी टर्मिनोलॉजी से लेकर एक सिस्टमैटिक स्टडीज़ करने के लिए। और भारतीय संस्कृति नाम की एक कोर्स है, टू लर्न अबाउट द रियल हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, एवरीथिंग। वो असली हिस्ट्री लर्न करने के लिए, सीखने के लिए ये कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया मतलब भारतीय संस्कृति कोर्स तैयारी की गई है। और आर्ष योग विद्या यानी शिवशक्ति क्रिया योग विद्या भी सिखाने के लिए एक शिवशक्ति योगा कोर्स भी तैयारी किया गया। और स्टूडेंट्स एक्सलेंस प्रोग्राम करके फिर एक कोर्स भी है बच्चों को हमारे धर्म को और हमारे राष्ट्र की चरित्र के बारे में सीखने के लिए एक मौका देने के लिए। और ये कोर्सेस सिखाते हमारे समाज में श्रेष्ठता लाने की कोशिश करते ही हर एक सिचुएशन में धर्म संरक्षण का धर्म संरक्षण करना इतना मुश्किल थी पुरानी दुनिया में, जब भगवान श्री कृष्ण परमात्मा आए थे और श्री रामचंद्र आए थे, तभी 1 या 2 आदमियों को मारने से धर्म संरक्षण होती थी। मगर आजकल 1 या 2 बल्कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल को मारने से धर्म संरक्षण नहीं होगा, बल्कि आइडियोलॉजी के साथ वार करना ही पड़ती है। जो आइडियोलॉजी विच इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिज्म, which is against the peace and harmony of the entire universe. So we had to do another activity, that is bringing back those who are misguided by other ideologies such which is anti-national and anti-humanism like ideologies. उस वक्त मत परिवर्तन का, मतांतरण का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारा समाज में हो रही थी। तो वहाँ उस वक्त ये हमारे कोर्स सिखाकर जो कुछ लोग हमारे धर्म से दूसरी एक आइडियोलॉजी में बिना पढ़कर कई इन्फ्लुएंस के वजह से मतांतर होने वाले थे, उन लोगों को वापस लाना, सही रास्ते में लाना, ये एक बड़ा काम करने था। हमारा समाज तो उतनी ब्रेन वॉश्ड समाज है जितनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से, ब्लाइंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से और मिशनरी स्पिरिट से काम करने वाले मतों के लोगों से, और इसी तरह कई आइडियोलॉजी से, कई एक्टिविटीज़ से मिसगाइडेड हुए हैं, ब्रेन वॉश्ड हुए हैं। उन लोगों को डी ब्रेन वॉशिंग करके, एंटी इंडोक्ट्रिनेशन करके वापस एक सही रास्ते में लाना, एक ह्यूमन बीइंग हो तुम, ऐसे उन को समझाना वो बड़ा मुश्किल का काम होती है। ये काम भी हम करते हैं, एसोसिएटिंग विद द support and with the keeping the good relation with the other organizations in our society who all working for the betterment of our society. Arsha Vidya Samaj doing this great activity. There are lots of needs our society have, but lots of organization working to fulfill that needs. But Arsha Vidya Samajam mainly focusing on bringing or guiding the people who are becoming
एंटी नेशनल्स, एंटी ह्यूमन्स, ऐसे तरह जाने वाले लोगों को वापस लाकर उन लोगों को एक अच्छा आदमी बनाने में, श्रेष्ठ व्यक्ति बनाने में फोकस करते हैं। ये तो आर्ष विद्या समाजम का काम के बारे में बोले, एक्टिविटी के बारे में बोलें तो इसको से सिखाकर ये एक्टिविटी कर रहे हैं। 99 से लेकर अब 2023 तक वी कुड ब्रिंग बैक more than 7,000 people to Sanatana Dharma. Among them, majority were misguided towards Islamic ideologies and that also anti-national ideologies and anti-human ideologies, we would like to say. उसमें भी majority were लव ट्रैप जिहाद में घुसकर आए हुए लड़कियां थी। तो हमारा काम तो सिर्फ केरल में नहीं, सारी दुनिया में हमारा एक्टिविटी का ज़रूरत है, क्योंकि हमारे संस्था के और आर्ष विद्या समाजम के और अब केरला स्टोरी फिल्म के रिलीज़ के बाद इतनी कॉल्स आ रही है, सिर्फ केरल से नहीं, केरल के बाहर से बोलें तो सारी दुनिया के सारे कोने से कॉल्स आ रही हैं। मम्मी पापा के पेरेंट्स के कॉल आते हैं, लड़कियों के कॉल्स आते हैं, इवन लड़कों भी कॉल करते हैं, हमें ऐसा एक प्रॉब्लम हुई है, हमारा भी एक कन्वर्शन का, फोर्सफुल कन्वर्शन का, लव ट्रैप जिहाद का और आइडियोलॉजिकल कन्वर्शन का, लैंड जिहाद का विक्टिम है, हमें भी कुछ बताना चाहते हैं मगर हमें डर लगती है बताने के लिए। आप लोग इतने courage you have and if you all people are very boldly saying to the whole world that you had such experience. ये तो हमारा महत्व नहीं है. It is not our greatness that we some people are able to face all you people. It is our Guruji Acharya Shri K.R. Manojji whose blessing, whose guidance which made us strong enough to face this great obstacle which our society facing nowadays. This conversion is the biggest problem that we know because we had experienced it. We are witnessing several such cases in daily basis. So हमारा आश्रम का एक ज़रूरत कितना है, हमारा आश्रम विद्या समाजम का ज़रूरत कितना है, हम जो कोर्स सीखकर सनातन धर्म के ओर आए हैं इसका ज़रूरत कितना है, ये समझकर, इसका नेसेसिटी समझकर हम इस काम के लिए हमारा पूरा जीवन आगे रखे हैं. और वी आर रेडी टू स्पीक जस्ट बिकॉज nobody should be there like Shruti or like Dr. Anakha, like Chitra Chechi or Vishali and Adira or like Akhila and all. So we should guide, we should expose what happened in our life. Then only people can understand what is happening in and around. So we are the people, we are the only people who are saving this type of the people who became witness for the ideological or love trap jihad or whatever types of jihad or conversion. This is the only institution which is focusing to bringing back those who misguided. Thank you very much, Shruti. और भी आप में से कोई कुछ कहना चाहे तो ज़रूर कहिए. एक बहुत बड़ी बहस चली थी, 32,003 26 लड़कियां यहाँ हैं और अभी इन्होंने खुद कहा 7,000 का नंबर एक संस्था का. तो मुझे लगता है कि अब ये 32,003 इन सबको, हम तो सैकड़ों लड़कियों से खुद भी मिल चुके हैं, तो 3 के नंबर की तो कोई बात ही नहीं थी. हमारी फिल्म 3 लड़कियों की कहानी लेके बताती है, इसलिए वो 3 का नंबर है. 3 के नंबर का एक्चुअल जो केरल में हो रहा है उससे कोई वास्ता नहीं है. ये कहानी 3 लड़कियों की कहानी के थ्रू इन हज़ारों लड़कियों की कहानी आप तक लेके आई है. और बहुत दुख भी हुआ कि मीडिया के कुछ लोगों ने इसमें उनका साथ भी दिया, हमें डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की. हम कोई नहीं है, लेकिन इतनी सारी लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं,
उनका साथ ना देकर इस फिल्म को छोटा या झूठा साबित करने की गंदी कोशिश करना, ये कितना सही है, यह हर एक को अपने आप को आईने में देख के जवाब देना चाहिए। 7,000 का नंबर अभी इन्होंने कहा है और इससे बहुत सारे आंकड़े लेके हम बहुत जल्दी आएंगे और सारा खुलासा करेंगे 32,000 का भी। उसके बाद मैं देखना चाहता हूं कि जिन लोगों ने हमें क्रिटिसाइज़ किया क्या वो अपना रुख बदलते हैं, लेकिन वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इन लड़कियों की लड़ाई को वीक मत करिए, आप इन लड़कियों के साथ अन्याय मत करिए। दैट इज़ आवर रिक्वेस्ट, दैट इज़ व्हाट वी वांट टू सी। प्लीज़ आप में से जो भी बोलना चाहे बोलिए। जैसा विपुल शाह जी ने कहा कि नंबर 32,000 या 3 की नहीं है, जैसा हमारे एक्सपीरियंस में सिंस 1999 टिल डेट वी हैव बीन सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग बैक मोर देन 7,000 पीपल, बट दैट डजंट मीन दैट द नंबर इज़ ओनली 7,000. Even today, after we have of the 7,000 people who came back, 25 of us are full dedicated to this mission, full time working for this cause, fighting against conversions and bringing back people. And each of us are getting at least 5 to 10 calls from parents across the world saying, this is happening to my daughter in my family, or this is happening to my son in my family. What do we do? How do we bring them back? Please help us. So the number is not in 7,000 or 32,000. It's a larger, very larger number. It's very prevalently happening, and it's not just happening to girls, it's happening to boys also. In the recent past 1 year itself, we have had at least 4 cases of radicalization of young boys aged about 15 to 17, two from the US and 2 from UK, and we have been able to bring them back completely, and now they are fully following Sanatana Dharma. So let's not go by numbers. If you actually want to know the numbers, it's much higher. It's going to be much higher than 32,000. That's what I can say from our experience, and what is happening in not just Kerala today but around the world. आप और कोई बोलना चाहता है? स्पेशल पॉइंट, हमारी केरला स्टोरी बनाने के पीछे जो रीज़न था, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई, सुदीप्तो दादा ने इन लड़कियों के साथ और आर्षा विद्या समाजम के साथ मिलके जो रिसर्च की और जिसकी बदौलत ये फिल्म बनी, आज हम उस इनिशिएटिव को आगे ले जाना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, प्रोटेक्ट द डॉटर्स, दैट इज़ द इनिशिएटिव। ये हम सबका फ़र्ज़ है कि हम ये आश्रम कंप्लीट होने दें। यहाँ पे कम से कम 300 लड़कियों को सुरक्षा के एनवायरनमेंट में रहने की सुविधा भी होगी, अपार्ट फ्रॉम ये सारे जो कोर्सेस चलाने वाले हैं। तो हम हमारी फिल्म की ओर से एक छोटी सी शुरुआत करना चाह रहे हैं। वी वुड लाइक सनशाइन पिक्चर्स and the entire team of Kerla Story would like to start this process by starting our small contribution of 51 lakh rupees towards this ashram. Well, ladies and gentlemen, I think we can. You've got cameras in hand, so I can't expect applause, but fine. I know there's a wonderful initiative out here. 51 lakhs for this wonderful, wonderful cause presented by Sunshine Pictures and the team behind the Kerala Story. Sir. So, this is just the beginning. We will continue to contribute, and we, as the society and nation, should take it upon us to help them, help this Samaj, help this institute. We'll give you the details if you want to put it out for bank details where people can make the donations. And let's build them, let's protect them. That is what today's main reason is. And as we said, we would like to hear from them more than us. Now we can start the question answer session if anybody wants to ask anything. Thank you very much. Okay, ladies and gentlemen, just a few ground rules. We'll have a few questions first to the cast and crew of the Kerala Story, and then we'll move on to our real heroes. Okay, so these are the real heroes, and then we have the real life heroes. Please note that we will not be having any one-on-ones.
So whatever you need to ask, Yeah, please ask. if they want to ask the questions to them, please go ahead. Okay, if you prefer to ask, yes. Hello? Shruti, I want to ask you, after the 26 sitting here, how many had actually joined the ISIS? देखिए, ये 26 लोग में कोई भी ISIS के ओर नहीं गए हैं, मगर उसके भी ज़्यादा वहाँ नहीं गए, मगर हमारा संरक्षण नहीं, हम नहीं संरक्षण दिए तो हम आर्ष विद्या समाजम और आचार्य जी हम सब लोग मदद नहीं किए तो उन लोगों का साथ भी ऐसा ही होता था. might have happened something with their life, with our life. They've been rescued. They were on their route to something very, very sinister, and they've been rescued from there. That's what she's saying. Hello, Vipul sir. Vipul sir and Sudipto sir. My question is to you all. This is Russell De Silva from PTI. While I understand what you all are trying to highlight in the movie, and you all have previously also stressed that this film, this story, is against terrorism and the terror network, and it doesn't target any single community. But having seen the film, I must bring light to certain points, like in Kerala, when we see this movie, there is not a single redeeming person from the Muslim community shown in the movie. Like in the scene in the mall, half the mall is attacking the girls, and the other half the mall, the people are just standing and doing nothing. Also, if the scene where Ada comes back to the person's house after getting impregnated to the guy's house, there are posters on his walls saying how nationalism is dangerous, Muslims the way forward. There's a poster showing the American flag and an Islamic flag attacking each other. The question is the iconography. While we understand that the message, maybe that's not your intent, but it's the iconography that stays with people long after they watch the film, because images are sometimes even more powerful than words. So isn't this iconography painting an entire community in a very negative light when not even one redeeming person is shown from that community? As you started your talk by saying that you understood that this film is not about any religion, not Hindu, not Muslim, not Christian, anything. It is about three girls who represents the sufferings of thousands of girls, which already I think convincingly they said, and if you have any other question, you can ask them. Now coming to that iconography and the characterization, we were not here to do the balance act, that thoda Hindu ko अच्छे दिखा दे, thoda Musalmano ko अच्छे दिखा दे. This was not our film. We wanted to tell the story the way it happens. Each and every word being spoken, each and every visual being shown is correct, and how far it is correct you can cross check with them. Number 2. Number 3, our film is on terrorism. Now this sinister plan of terrorism is been hatched against the world. Not only India, Europe is suffering, America is suffering, Australia is suffering. Now in other countries they have separated the terror network. When it comes to their state, the opposition and the party in power are together. Terrorism is on the one side. But unfortunately in my country, that if been said that terrorism has no religion, but when it comes to Kerala, when we are started talking about terrorism, immediately people started talking about the religion. I think you know that the terrorists, how they misuse religion. In the name of Islam, the way Islam is being every day been smashed in Syria, Yemen, I don't think you need the example from Kerala to understand that how Islam is being misused in the world. So I think we have done the service to the religion, Islamic religion, to tell people that your religion is being misused. So you be concerned, and you will be asked, you will be surprised to know we are getting mails and messages. You can see it in the public Instagram and Twitter in the messages. The people who are abusing from the day our trailer was been released till the film is released. In these 10 days, we were flooded by abusive messages. One girl from Kerala
21 years old girl wrote, "Sorry bhaiya," that was her language. "Sorry bhaiya, I have abused you last 10 days to defame my religion. After watching the film, we realized that you have done the service to the nation." And every patriotic Indian, you can go and check, I did not delete. Patriotic Indian should see the film to know that how danger we are in. So I think this iconographic that is democracy does not work or whatever you have seen in the set, it is deliberately used. The radicalization of Kerala men are reached to the dangerous level. Few days back a video came, a small 9-year-old boy sitting on the shoulder of his father was shouting the death for the Hindus and Christians. So this radicalization in Kerala has reached to that level. So I think without taking any name of any religion, we have done the service to the nation and for all these girls. Take your concern, but I would have felt more comfortable if we would have spoken about the pain of the girls. You are worried about some iconography. You're not worried about these girls getting in such a bad trap. And that's your first question. So that's the most important thing that you felt. I feel we are doing disservice to these girls and every victim by focusing on that side rather than focusing on the girls. Vipul, hi.